today we are going to start with demand and factors affecting demand. So let's begin. Okay, demand. Now this demand, what is demand? Demand क्या है? Demand for a commodity refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. तो वो क्या है? हम डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम वो चीज डिमांड कर रहे हैं जो हमें चाहिए, जो कंज्यूमर को चाहिए और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं at various possible prices during a particular period of time. Next is demand is a flow concept. Now what is this flow? Flow is a variable which is expressed per unit of time. जो टाइम के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है फ्लो वेरिएबल, राइट? Now demand does not refers to single isolated purchase. हम अगर कोई भी चीज एक बार बिक गया तो उससे डिमांड जनरेट नहीं होता, पर कब जनरेट होता है? जब वो कंटिन्यूसली वो बिकता रहा है, वो बिक रहा है, वो अभी भी वो कंटिन्यूसली उसको शॉप्स सेल कर रहे हैं, वो अभी भी सेल हो रहा है, तो कभी कम उसका डिमांड होता है, कभी ज्यादा होता है. डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस. डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस, राइट? So first let me give an example of this. So let's say I make a t-shirt. मैं t-shirt बनाती हूँ, मेरा एक ब्रांड है, मैं t-shirt बनाती हूँ. तो मुझे पूछा गया कि इसका डिमांड क्या है. What is the demand of my t-shirt? So I have told that per day my demand for t-shirt is 200 and weekly the demand of my t-shirt is 1400 and yearly demand of my t-shirt is 73,000. Okay, 73,000. So you can see whenever I'm telling the demand of a t-shirt, I'm mentioning the time period. मैं किस टाइम पीरियड की बात करूँ मैं वो मेंशन करूँ. तो इसका मतलब क्या कि अगर मुझे सिर्फ डिमांड पूछे तो मैं ऐसे नहीं बता सकती. यू नीड टू मेंशन द टाइम पीरियड. So without mentioning the time period, demand is meaningless. Whereas one another important factor of demand is that it's always at a price, right? Give an example of this now. Now let's say I want a t-shirt, this t-shirt. Yeah. So I'll buy it only when the price is up to 500. 500 तक ही अगर इसका प्राइस रहा तो ही मैं इसको खरीदूंगी. लेट्स से द प्राइस इंक्रीज टू 700. 700 हो गया. So when the price increase shift from 500 to 700, I will not buy it because it is out of my budget. ये मेरे बजट के बाहर है. So when the price is this up to 500 which I can afford, so I was demanding this t-shirt. But as soon as the price increased to this, the demand for this t-shirt decreased. Or moving on, it's inversely proportional to each other. So of course we can understand the relation between demand and price. So if the price increases, demand will decrease. So इसको कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड का एक साथ बनता नहीं है. एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा. Clear? Okay. Types of demand, very important. So let's start with individual demand. इंडिविजुअल डिमांड से ही हमें क्या पता चलता है? किसी एक का डिमांड, किसी एक इंसान का डिमांड का बात कर रहे हैं. So we are talking about a single person's demand, right? So let's say when the price of oranges was 5 rupees, तो आप 15 ऑरेंजेस ले रहे थे, राइट? एंड जब वो शिफ्ट हो गया to 10 rupees, so you started buying 9 oranges. Okay, so this was your individual demand. Was your individual demand for the oranges as per the price. ये आपके अकेले का डिमांड है. Moving on, market demand.
तो मार्केट डिमांड जब हम कहते हैं कि मार्केट का क्या हाल है, तो हम सिर्फ एक शॉप या एक दुकान के बारे में हम नहीं बोलते, हम ओवरऑल की बात करते हैं, सभी को मिला के। तो ये ओवरऑल डिमांड रिलेटेड है, राइट। सो इसका मतलब सिर्फ आपका या मेरा नहीं, सभी का मिला के जो डिमांड होता है उसको कहा जाता है मार्केट डिमांड। ओके, so it refers to not just your demand but both of us, not only both of us, the demand generated from all of us. So this let's price and this is the demand. So it's you, ये आप हो, ये मैं हूँ। Okay, you and me. So when the price of the oranges was 5 rupees, you were buying, you were demanding 50, आप 15 oranges ले रहे थे और let's say मैंने 11 oranges ले, but when the price increased to 15, you started buying 10 and I started buying, let's say 6. Okay, so when the price of oranges was 5 rupees, the 5 rupees था, तो मेरा total demand कितना था? 26. अब जब 15 हो गया तो मेरा total demand क्या हो गया? 16. So this is what you call market demand. ये sum total of all the individuals demand is called as market demand. I hope this much is clear to you. Moving on. Next is joint demand. We can understand something is connected to something, right? Let's take an example, pen. Okay. Now this pen, it works only when you put ink inside the pen. जब हम ink डालते हैं पेन में तभी ये चलता है. तो fountain pen and ink. So let's say the price of fountain pen decreased. So the demand for the fountain pen will increase. And the ink which is related to that will also increase. We will demand more ink. But as soon as price decrease, it will affect the demand of the fountain pen. Okay, right? This means the demand of one commodity affecting the demand of other commodity. एक commodity का demand दूसरे commodity के demand को affect कर रहा है, तो इसको कहा जाता है joint demand. And in always remember joint demand क्या है? Joint demand हम तभी कह सकते हैं कि दोनों का sign एक direction, मतलब एक increase कर रहा है तो दूसरा भी increase करेगा, एक decrease कर रहा है तो दूसरा भी decrease करेगा. Can the demand of one thing increases, one commodity increases, which result to decrease in the demand of other commodity? Yes, it's possible. We will understand that part later on. So you can see this graph, same thing has been explained in this graph. Is that clear to you? Moving on. Composite demand. Composite means what? To compose something to make it short. Demand, let's start with the example. Say coal. Demand of coal can be put to several uses. Okay, so if I demand coal, so I can use this commodity for let's say heat, for heating, गरम कोई चीज गरम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, cooking, railway engines को चलाने के लिए, operating railway engine, right? And you demanding one commodity to use it for several purpose, right? Derived demand. Demand to fulfill the demand of one thing, for one thing we demand several other things. With that I mean कोई एक चीज को फुलफिल, कोई एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम बाकी उससे रिलेटेड हम और चीजों का डिमांड करते हैं. जैसे कि बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग या घर बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें लगती है? हमें स्टील लगता है, ब्रिक्स लगते हैं, ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, स्टोन्स पत्थर लगते हैं, लकड़ियां लगती है, राइट. सो इसका मतलब कि अगर बिल्डिंग बनाने का जो डिमांड अगर इंक्रीज करता है, तो डिमांड ऑफ दीज कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, टिम्बर, आयरन, ऑल these are used for making buildings. So this is your direct demand. Direct demand is to make building and these are the derived demand. ये इन इस चीज को बनाने के लिए मैंने इन चीजों का डिमांड किया है. So I hope this much is clear to you. Moving on.
Ex-ante exposed demand. Now, when you go to a shop, you want to buy, you like a dress, so you are planning to buy it. Still now you haven't bought it, you haven't purchased it, but you are planning to buy it. पर आप वो प्लान कर रहे हो लेने का, अभी तक लिया नहीं है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? We call it ex ante demand. Suppose you liked it and you have purchased it, so at that time we call it as ex post demand. Okay, so we have actually purchased it during a specific period, a time period. Clear? Moving on. So determinants of demand are factors affecting demand or factors of demand. Price of the commodity. Now price of the commodity का product का price. So as you can see, demand of product changes as per the change in the price of the commodity. कोई भी चीज का डिमांड चेंज हो जाता है अगर उसका प्राइस चेंज हो तो, या तो बढ़ेगा या घटेगा. People deciding to buy product remain constant only if all the factors related to it remain constant. अगर हम सिर्फ प्राइस, कमोडिटी का प्राइस कंसिडर करते हैं तो हमको बाकी जो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को, उसको हमको कांस्टेंट पकड़ना होगा. मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है एक्सेप्ट प्राइस. क्लियर? मूविंग ऑन. द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर जो है, जो ले रहा है, उसकी सैलरी क्या है? अगर इनकम इंक्रीज करता है, अगर सैलरी इंक्रीज करता है तो ऑफ कोर्स सैलरी इंक्रीज करने से जो नंबर्स ऑफ गुड है, जो चीजें हम खरीद रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगा. ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट, ये लॉजिकल है. राइट, बट अगर इनकम डिक्रीज करता है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगा. So, however, this may not be the case. भी हो सकता है कि शायद इनकम इंक्रीज कर रहा हो पर डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहा है. ऐसे भी केसेस हो सकते हैं. So let's know. So there is three types of goods: normal goods, inferior goods, and inexpensive goods. We will understand this one by one. So let's start. Normal good and inferior good. So normal goods are those goods with increase in income, the demand of that commodity will also increase. अगर इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है. इसका मतलब व्हेन माय इनकम वाज दिस, मेरा डिमांड ये था, बट जैसे ही मेरा इनकम इंक्रीज हो गया तो मेरा डिमांड ये है. राइट, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, मींस पॉजिटिव शिफ्ट. Inferior goods. So inferior goods are those goods which with the increase in the income, the demand decreases. There is a leftward shift, negative shift. एक increase कर रहा है तो दूसरा decrease कर रहा है, caused by rise in income. Thus decreases demand. Okay. Okay. Cost of related goods and services. So for a complementary product, an increase in the cost of one, एक के प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो ये कमोडिटी का, इससे क्या होगा? दूसरे का डिमांड डिक्रीज कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा? मेरा बटर का जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगा. क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो हम एक साथ खाते हैं. राइट, तो एक का प्राइस इंक्रीज करने से दूसरा का डिमांड डिक्रीज कर जा रहा है. सिमिलरली, an increase in the rate of commodity will generate demand for a substitute product to increase. So increase in cost of tea will raise the demand of coffee. So कुछ चीजें ऐसी भी है कि एक का जो commodity का प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा. Increase in the cost of the tea will increase the demand of the coffee. People will shift from tea to coffee. Right? Therefore, decrease the demand for tea. Now, consumers' expectation. High expectation of income or expectation in the increase in price leads to increase in demand. का मतलब कि मैं सपोज गोल्ड लेना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर पता चले कि इन फ्यूचर इसका प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है
तो मैं अभी वो गोल्ड लेने की कोशिश करूँ, अभी वो ले लूँ। ऑफ कोर्स अभी वो सस्ता मिल रहा है, अभी it's we can buy it in a low cost compared to the future cost, right? So we will start demanding it more. In future, the price of the commodity will decrease. So we won't buy it now. Let's take an example of AC. We use AC in summer a lot. So the price of AC in summer is very much. But we know in winter we don't use AC that much, or we actually don't use AC. So in winter the price of AC will decrease. So my future expectation says that the price of AC will decrease in future. So I will not buy it now. We won't demand it now, but I will demand it later. So that means if the price in future decreases, if we expect the price to decrease in future, we won't buy it, we won't demand it. So the demand will decrease. The future expectation says the price will increase, the demand will increase. Next is buyer in the market. Okay, the number of buyers for a commodity are more or less, then there will be shift in demand. Effect refers to the tendency to emulate the consumption style or other people persons such as his friends and neighbors. So ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम अपने आसपास के लोगों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा वो ये इतना अच्छा ब्रांडेड सोफा उसने खरीदा तो मैं भी वैसा ही एक ब्रांडेड सोफा खरीदूंगी. Okay, we tend to copy other people sometimes. So this is what to demonstrate, to show people, right? To demonstrate it. Government policy. Now government policy क्या है? The government imposes taxes on various commodity, form of VAT, excise duty, etc. The price of these commodity will increase as a result. Demand of these commodity will fail. इसका मतलब क्या कि अगर टैक्स इम्पोज हो रहा है तो प्राइस का दाम बढ़ जाएगा. The tax increases, the demand of the commodity will start decreasing. Thanks for watching. More such kind of videos will be uploaded soon. Stay tuned, take care, and study hard.